Hello friends, how are you? In this video lecture of thermodynamics, today we will see what is work in isothermal and irreversible process. Isothermal process का मतलब होता है process in which temperature of the system remains constant. यानी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है यानी इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है यानी डेल्टा टी जीरो. वी हैव सीन अबाउट दिस. इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें ड्राइविंग फोर्स इज वेरी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट अपोजिंग फोर्स. तो इस प्रोसेस में कितना वर्क हो सकता है? टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. अगर आपको पसंद आया तो लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. नाउ व्हाट इज वर्क? रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. किस प्रोसेस में वर्क ज्यादा हो सकता है? दैट इज अ मैक्सिमम वर्क. We have seen in case of what reversible process, because reversible process never goes to completion. ये जो प्रोसेस है ये irreversible है, it always goes to completion. इसमें मैक्सिमम वर्क नहीं होगा लेकिन कितना वर्क होगा? Suppose this is the vertical cylinder fitted with wetless and frictionless piston. ये एब्सोल्युटली जो पिस्टन है एब्सोल्युटली वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस है यानी इजीली मूवमेंट हो सकती है इसकी. A is the cross sectional area of this vertical cylinder. नाउ ये जो P है, सो दिस P यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय व्हाट आइडियल गैस. बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल, बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस सेम होगा सो इसका एक्सपांशन नहीं होगा यानी देयर इज नो मोमेंट ऑफ दिस पिस्टन. इस पिस्टन की मोमेंट कुछ भी नहीं होगी. नाउ सपोज एक्सपांशन ऑफ दिस आइडियल गैस. ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है. इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस. इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स इज वेरी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट अपोजिंग फोर्स. यानी यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा कंपेयर टू व्हाट एक्सटर्नल प्रेशर. तो एक्सपांशन होगा, आइडियल गैस का एक्सपांशन होगा. और जब आइडियल गैस का एक्सपांशन होगा सो मोमेंट ऑफ दिस पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सपोज हियर इज द पोजीशन ऑफ पिस्टन आफ्टर एक्सपांशन. Before expansion, suppose V1 is the initial volume of ideal gas. After expansion, suppose V2 is the volume of ideal gas. अभी ideal gas का वॉल्यूम बढ़ा and we know that Boyle's law pressure is inversely proportional to volume. यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा. फिर से इस आइडियल गैस का प्रेशर कम होगा यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय व्हाट दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बाहर का जो प्रेशर है एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस इट विल बी सेम. मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर विल बी द सेम बट साइन इज अपोजिट. सो सपोज दिस D is the displacement of this piston. D is the displacement of piston. तो क्या हुआ? once again this is vertical cylinder fitted with wetless and frictionless piston. A is the cross sectional area of this vertical cylinder. In this case we have taken, in this cylinder we have taken ideal gas. P यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस. बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. जब बाहर का प्रेशर और प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस सेम होगा सो देयर इज नो मोमेंट, देयर इज नो मोमेंटम इन दिस पिस्टन यानी देयर इज नो एक्सपांशन ऑफ दिस आइडियल गैस. सपोज एक्सपांशन ऑफ इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ दिस आइडियल गैस. जब इसका एक्सपांशन होगा सो मोमेंट ऑफ दिस पिस्टन विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. So this is the new position of what? Wetless and frictionless piston. Before expansion, V1 is the volume of ideal gas. After expansion, V2 is the volume of ideal gas. अब वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ाने प्रेशर फिर से डिक्रीज हुआ and pressure is inversely proportional to what? Volume. If volume increased, what will happen? Pressure will be decreased. So again, pressure exerted by ideal gas and external pressure, it will be same. Magnitude of pressure will be the same, but only sign is different. Only sign is different. So D is the moment of this piston. Then how to find out work? We know that work is equal to force into displacement. ये work है, force into displacement. We can write W is equal to F into D, where F when a force, D and a displacement. We know that pressure is equal to, what is the formula of pressure? Pressure is equal to force per unit area. Force per unit area.
So for force we can write F is equal to P into what? A. Suppose A equation 1A, A equation 2A. Put equation 2 in equation 1. So equation 1 will go at W is equal to, now instead of force we have to write P into A into D. Magnitude of pressure is same, and pressure exerted by ideal gas and external pressure magnitude is the same, but sign is different. So for this P we can write minus P external. So W is equal to minus P external into A into D, because pressure exerted by ideal gas is equal to minus P external. Magnitude same, but only sign is what? Different. See here. So this is A into D. Area into displacement. A and area is the what? Cross-sectional area of this vertical cylinder. So we know that what is the meaning of A into D? Area into displacement, this displacement of piston, it will be delta V. So this will be the change in volume. Therefore W is equal to minus P external into delta V. This is the work in isothermal and irreversible process, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है. So W is equal to minus P external into delta V. So what out the unit of this work? इसका biggest unit क्या होगा? प्रेशर का यूनिट होगा एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम का लीटर, एंड लीटर एटमॉस्फेयर इज द व्हाट? Liter atmosphere is the biggest unit of work. So this is work in isothermal and irreversible process. Once again, in this vertical cylinder, suppose we have taken ideal gas, इसमें ideal gas है. Before expansion of ideal gas, pressure exerted by ideal gas is equal to external pressure, that is atmospheric pressure. अगर इस ideal gas का expansion होता है, ये एक possible है. Irreversible expansion, इसमें होता है क्या? ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट? अपोजिंग फोर्स. यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस डेफिनेटली it should be greater than that of what? External pressure for the expansion, because the driving force is very much greater than that of what? Opposing force in case of irreversible process. So इसका expansion होगा. V1 is the initial volume before expansion. After expansion, V2 is the volume of ideal gas. Volume बढ़ा, and we know that what is Boyle's law? Pressure is inversely proportional to volume. जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा. फिर से आइडियल गैस का प्रेशर कम होगा, तो फिर से क्या होगा? दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस एंड एक्सटर्नल प्रेशर सेम होगा, एंड पिस्टन यहाँ पर कांस्टेंट होगा. सो व्हाट आउट वर्क? वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन. वी नो दैट pressure is equal to force upon area. So force is equal to P into A. A pressure, this P and pressure exerted by ideal gas. लेकिन after expansion, magnitude of pressure यानी pressure exerted by what? Ideal gas P, and external pressure, that is atmospheric pressure, magnitude will be the same. इसका magnitude same रहेगा, लेकिन sign different. So that is why for P we can take minus P external. So here minus P external. Area into displacement. We know that A is the cross-sectional area of this vertical cylinder. So cross-sectional area into displacement, A होगा delta V and a change in volume. So we can write W is equal to minus P external into delta V. इसका unit क्या होगा? What is the SI unit of pressure? That is atmosphere, volume, liter. So liter atmosphere is the unit of this work in isothermal and irreversible process. If any doubt, you can put your doubt in comment box. Definitely I will get back to you. Thank you.